Assalamu alaikum. I am Ms. Sidra Bhatt. I am your maths teacher. Hope you are fine. Today we will do page number 49 and 50 of countdown. Now take out your countdown and open page number 49. On page number 49, first you will write down the date, homework and day at the top of the page, subtraction, converting hundreds and tens. Now look at the question number 1. Look at the previous page. Follow Tiger's step to complete these. Now look at the part B. Part A has been done for you. Part B, 100 tens and ones, 3 hundreds, 4 tens and 2 ones, minus 6 tens and 4 ones. Now we will subtract the ones column. We cannot subtract 4 from 2 because 4 is greater than 2. So we will borrow 1 10 from 4 tens. 4 tens में से हम 1 10 बोरो लेंगे and 1 10 को हम कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 10 ones में 1 10 is equal to 10 ones and 10 ones plus 2 ones. 2 ones is equal to 12 ones. 10 plus 2 is equal to 12 ones. Now subtract the ones column. 12 minus 4. 12 minus 4 is equal to 8 ones. Now subtract the tens column. 1 10 is borrowed from 4 tens. So we are left with 3 tens. हमने ones के कॉलम में tens के कॉलम से उधार लिया था. 1 10 हमने ones के कॉलम में दिया था. अब tens में हमारे पास 4 minus 1 is equal to 3. Now 6 is greater than 3. अब 6 बड़ा है 3 से. So we will borrow 100 from hundreds column. We will convert 100 into 10 tens. 10 tens plus 3 tens is equal to 13. Now we have 13. 13 minus 6. 13 minus 6 is equal to 7. 13 minus 6 is equal to 7 tens. Now subtract the hundreds column. 100 is borrowed from 300s. अब हमने 300 में से 100 बोरो दिया था. हमने उधार लिया था. अब 3 जो है 300 माइनस 100 जो हमने दे दिया. 300 माइनस 100 is equal to 2. So we are left with 200s. Now 2 minus कोई वैल्यू नहीं है 100 में सेकंड 2 सेम नीचे हम राइट कर देंगे. Now 342 minus 64 is equal to 278. 200. Now look at the part L. 100 tens and ones, 4 hundreds, 2 tens, 1 1 minus 2 hundreds, 5 tens, 9 ones. Now we will subtract the ones column first. 1 minus 9. We cannot subtract 9 from 1. So we will borrow 1 10 from 2 tens. अब हम 2 tens में से 1 10 बोरो लेंगे और ones में 1 10 is equal to 10 ones. So
10 plus 1 is equal to 11. 10 plus 1 is equal to 11. 10, 110 plus 1 is equal to 11. Now subtract one's column. 11 minus 9. 11 minus 9 is equal to 2 ones. Now subtract the tens column. 2 tens minus 5 tens. 2 tens में से हमने 1 10 वंस के कॉलम में दे दिया. अब 2 minus 1. 2 tens minus 1 10 is equal to 1. अब हमारे पास पीछे टेंस में कौन सा नंबर लेफ्ट है? नंबर 1. Now we cannot subtract 5 tens from 1 tens. So we will borrow 100 from hundreds column. 400 minus 100. 100 को जब हम कन्वर्ट करेंगे टेंस में तो वो हमारे पास आएगा 10 tens. And 10 tens plus 1 is equal to 11. 10 plus 1 is equal to 11. And 4 becomes 4 minus 1 is equal to 300s. Now we can subtract tens column easily. 11 minus 5. 11 minus 5 is equal to 6 tens. Now look at the hundreds column. 300s minus 200s. 3 minus 2 is equal to 100. So 421 minus 259 is equal to 162. Now solve the remaining parts. On page number 50, first we will write down the date, homework and day at the top of the page. Review, addition and subtraction. Question number 1. Complete the sums. Convert where necessary. Remember to look for plus और माइनस. अब आपने यहाँ पे कुछ सम्स आपको दिए गए हैं प्लस के, कुछ सम्स आपको दिए गए हैं माइनस के. अब आपने देखना है कि आप कौन सा सम सॉल्व कर रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अगर एडिशन है तो हम उसमें 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और अगर सब्ट्रैक्शन के सम है तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे. Now look at the part A. Tens and ones. 13. 13 plus 28. Here we have an addition sum. यहाँ पे हमारे पास addition का sum है. 3 plus 8. 3 plus 8. 11. 3 plus 8 is equal to 11. 11. So in 11, 1, 1 and 1, 10. So we will write 1 in the ones column and 1 carry forward in tens column. 1 plus 1 is equal to 2 and 2 plus 2 is equal to 4. 13 plus 28 is equal to 41. Now look at the part D. Tens and ones. 72 minus 55. Here we have a subtraction sum. First we will subtract the ones column. 2 minus 5. We cannot subtract 5 from 2. अब हम 2 ones में से 5 ones माइनस नहीं कर सकते. So we will borrow. अब हम क्या tens में से borrow लेंगे और 7 becomes 6 and 110 जब हमने ones में दिया तो उसमें हमने 110 कन्वर्ट हो गया 10 ones में. 10 ones plus 2 is equal to
12. So अब हम इसके ऊपर कौन सा नंबर लिख देंगे? 12. Now we can subtract 12 minus 5. 12 minus 5 is equal to 7. So we will write down the 7 in the ones column. 7. Now 7 में से हमने 110 जो है वो बोरो लिया था वंस के लिए. सो 7 minus 1 is equal to 6. सो हमारे पास क्या रिमेनिंग है? नंबर 6. 6 tens minus 5 tens is equal to 110. 72 minus 55 is equal to 17. 110 and 7 ones. Now solve the remaining parts. Thank you. Allah Hafiz.